Silicon Valley Bank collapse. And what led to this particular development? Before starting it, let me tell you a few things. Now, Silicon Valley Bank, if you see, it is the 16th largest bank in United States. And it has collapsed. Okay, they have filed the bankruptcy. They don't have money. Now, there are significant developments responsible for this. But the point is this is the alarming time. ये alarm बज जाना चाहिए. Now, our experts, finance department related people, they are pointing towards few things that India is majorly not going to be impacted by that, okay? And it is going to hit only some of the startups and the IT firms for now. Other than that, it is not going to make a big impact on the Indian scenario. This is what they are saying, okay? But you have to understand, this highlights, can we say it's a beginning of global recession? Because it is all about sentiments. Now, this major bank, it has failed in United States, world's biggest economy. I hope you recall the 2008 financial crisis. Now, that financial crisis also started with the collapse of the banks. So, we might be witnessing same thing. Now, banks are already under pressure. They are not getting business. Specifically, when Federal Reserve, it is increasing the interest rate. Okay, so this is what is happening there. Bank को पैसा कहाँ से मिलता है? Bank पैसा बनाता है loan देके. Okay, now credit is costly in America. Earlier they used to have very minimum, you can say, charge for that, and banks used to make money. But right now, the overall environment is like this. The loans are costly there. Already their Federal Reserve, they are tightening the monetary policy. So this is one scenario that is going on. Now, other than this, there are multiple reasons, and those are quite interesting. Dekhte hain. So one reason is this downturn in the technology stock over the past year. Basically, this is how banks operate. Okay, so you are a depositor. You are going to put up your money with the bank. आप डिपॉजिटर हो, आपने पैसा डाला, सेविंग्स अकाउंट बनाया उसके अंदर, ओके, एंड यू आर गोइंग टू पुट अप मनी. दैट मनी बैंक विल बी यूजिंग इट टू गिव, मीन्स फॉर लोन देने के लिए. बैंक विल बाय सम बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड बैंक खरीदेगा, बैंक में इन्वेस्ट इन द स्टॉक एज वेल, ओके. तो वो पैसा इस तरीके से चलता हो ना. दिस इज द नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा. The point is this, they bought some of the technology stocks. Those stocks went down. उनकी वैल्यू कम हो गई. It means that value of assets in which the bank has invested, that value has gone down. Maybe this is the temporary thing. In the coming future, the value can go up as well. ऊपर भी जा सकता है वो, जरूरी नहीं है खराब ही होगा. Other important point is this, एक तो asset down हो गई. Federal Reserve continuously it is increasing the rates, and this is impacting the other banking scenarios as well. Loan नहीं मिलेगा, वो मैंने बता दिया आपको. Now, there has been significant development. As I told you, bank, they bought billions of dollars worth of bonds. Bonds इन्होंने खरीदे, यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसके अंदर. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है, सिलिकन जो ये वैली बैंक है, इसके मेजर क्लाइंट कौन हैं? क्लाइंट्स आर मेजरली स्टार्टअप्स, बिग कंपनीज. दे आर द मेजर क्लाइंट्स ऑफ दिस सिलिकन वैली बैंक. आम जनता यहां से लोन नहीं लेती है, बड़े बड़े स्टार्टअप लोन लेते हैं. उनके अकाउंट्स हैं यहां पे. दे आर पुटिंग अप देयर मनी इन दिस. मिनिमम क्राइटेरिया टू पुट अप अ मनी इज $250,000. $250,000 इतना अमाउंट आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे. ऐसा कुछ सिस्टम है इनका. तो बड़े खिलाड़ी ही आते हैं, बिग प्लेयर्स ओनली दे आर देयर. नाउ startups, they have their accounts, and startups across the world, they are witnessing the cash crunch. इंडिया के अंदर भी जो स्टार्टअप हैं एडटेक वाले, वो भी कैश क्रंच फील कर रहे हैं. इट इज स्टेटेड दैट राइट नाउ विंटर इज गोइंग ऑन. आज की दुनिया चल रही है विंटर की. फंडिंग नहीं आ रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है. नाउ दीज स्टार्टअप्स, दे आर विटनेसिंग द विंटर, सो दे हैव टू बर्न देयर ओन कैश. इनको अपना कैश बर्न करना पड़ रहा है अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो, एंड दे आर होल्डिंग अप देयर अकाउंट
इन सिलिकॉन वैली बैंक, ये सैलरीज देने के लिए अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और दैट मनी वाज विड्रॉन ऑन अ बल्क स्केल. मल्टीपल स्टार्टअप्स दे स्टार्टेड विड्रॉइंग मनी, क्योंकि आज की डेट में उनके पास अपना पैसा ही इनको बर्न करना पड़ रहा है, इन्वेस्टर का पैसा नहीं आ रहा है. दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन, ये चल रहा है यहां पे. सो I told you customers and largely startups or tech centric companies. Now their capital funding is drying up, so they have to, you can say, use their own money. अपना पैसा यूज कर रहे हैं. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है इसमें, बैंक के ऊपर बर्डन पड़ गया, customers are withdrawing their deposits and at a large scale. So this bank, they started selling their assets. जो भी इनके पास एसेट थे वो इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, इवन ऑन लॉसेस. जो बॉन्ड खरीदे थे उसकी मैच्योरिटी अभी नहीं है, वो आने वाले टाइम पे आएगी. स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, वैल्यूज वर, टेक्नोलॉजी स्टॉक की वैल्यू कम चल रही है, मार्केट नहीं उठ रही है, सो एसेट की वैल्यू कम है, एंड दिस बैंक स्टार्टेड सेलिंग अप दोज पर्टिकुलर एसेट्स टू बेसिकली मेक एन अरेंजमेंट फॉर कस्टमर्स. भाई नाम खराब हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं, पता लगे अगले दिन की बैंक आप पैसे ही नहीं निकाल सकते, आपका पैसा डूब गया. सो दे वर डीलिंग विद देयर रेपुटेशन इशू एज वेल. सो दे हैड दिस प्रेशर दैट दे हैव टू रीपे द अमाउंट दैट द कस्टमर्स आर विड्रॉइंग. सो दे स्टार्टेड सेलिंग देयर ओन एसेट्स टू मीट दिस रिक्वायरमेंट. Now the point is this, customers, they got to know that this bank is not in good shape. खबर फैल जाती है, ये दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है. They got to know कि हमारा पैसा डूब जाएगा, and they started withdrawing their money at a bulk stage. और ये जो कॉर्पोरेट खाते होते हैं, they are very fearful. They are very fearful of the bank failure. So deposits were withdrawn on a bulk scale, and that led to the collapse of Silicon Valley Bank. ये पूरी कहानी है और कितनी कड़ियां इसके अंदर जुड़ी हुई हैं. How connected these things are. So it is really important to understand the overall scenario, that this is the environment going on. Now, Indian startups will be impacted. अब आप इसको समझिए, थोड़े बहुत इम्पैक्ट होंगे, but in US is already, you can say, dealing with the global economic slowdown. Their economy is down, okay, growth rate is not picking up, और साथ में इस टाइप की चीज हो गई है, and it is expected more than 1 lakh people in United States, they are going to lose their jobs. Lot of people will be fired from these startups. अब इन startups का पैसा अटक गया है. And as per the report in the morning, there were some news notifications. Those notifications were like this, that Federal Reserve, now Federal Reserve has given the assurance that your paisa, your amount, till $250,000, it will be insured. आपके अकाउंट में जितना पैसा है, मिनिमम $250,000 आपको मिलेगा उसमें से. But these are big companies. They may be having more money than this $250,000. So that's the scenario. $250,000 तक तो वो इंश्योर कर देंगे, पक्का दे देंगे, ऊपर वाले की कोई गारंटी नहीं है. So this sort of trouble is going on right now, and this explains the overall scenario. Now when you are dealing with this type of thing, it is important. देखिए ये point है that we should think about, you can say, coordinated effort with among the G20 central banks. At least ये तो अब होना चाहिए, okay, and definitely in the G20 summit as well, this particular, you can say, issue is to be discussed. They'll try to explore that the damage doesn't spread out to the world. Now please pay attention here. This is not an end in US. In Europe as well, UK. Now UK government, they are taking cognizance of this development, and they are planning that how to shield the UK based startups. क्योंकि ये सिलिकॉन वैली के जो बैंक हैं, इनके अरेंजमेंट, जितना भी इनका नेटवर्क है,
it has spread out across the world. So this is the new development that is taking place. Already the European markets, they are, you can say, preparing for this eventuality. ये आज की डेट में चल रहा है, and one of the major reason is Ukraine-Russia war. और आज ही आप देखेंगे how to end a war. The question is that because Europeans, they are also draining out. There is a term called war fatigue. The world is witnessing this war fatigue. सब थक गए हैं. When this war is going to end? There are experts who are of this opinion that this might lead to the development that the world is going to accept what's the situation in Ukraine. यूक्रेनियन गवर्नमेंट को समझाया जाएगा जितना एरिया रशिया ने ले लिया उनको बिठाओ, आप भी आगे बढ़ो. This might be the new development in the coming days. So we have to wait and watch how things will progress, but this is how things are interrelated. Clear? Geopolitical challenges are developing or inflating the economic challenges.